Good morning, students. Today we are going to discuss the next chapter, a new chapter, and the name of the next chapter is students staffing. Students, as you know, there are 5 functions of management and 3 levels of management. Your chapter consumer production is over now. Your chapter marketing management is over now. Your chapter nature and significance of management we have done, and we have done the principles of management. Now we have start the functions of management, students. You know there are 5 functions of management: planning, organizing, staffing, directing and controlling. And there are 3 levels of management, students: top level management, middle level management and lower level management. Today we are going to start the next topic, that is a next chapter, that is staffing. Right, students? So let's discuss first of all the main functions of management, students. Planning, it is a function of top level management, students. प्लानिंग के अंदर क्या काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट? टू मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन. देन ऑर्गेनाइजिंग इज द रिसोर्स फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टूडेंट्स. राइट स्टूडेंट्स? filling up the resources in the organization, authority, responsibility and accountability. Now what do you mean by the term staffing? That comes under the next function of management. Filling up the various position in the organization is known as staffing. Right man, right job, right time, right place. That is known as staffing. Filling up the various vacancies in the organization, filling up the roles in the organization, filling up the jobs in the organization, that is known as staffing. Staffing is the key function of management, students. Right, students? So let's discuss staffing. Staffing consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel. Now students, what do you mean by the term staffing? Staffing means manpower planning. There are certain new words now, students, which are going to students, manpower planning के अंदर students top level management ये plan करता है कि how many types of employees required in the organization. Number and types of employees required in the organization, that has to be discussed in planning. But actually the roles, the jobs has been filled under staffing process. Right, students? That is known as manpower planning. Then recruitment, apply for the job in the organization. Selection करना, those who have applied उसमें से selection करना. Right, students? Then after selected candidates को training पर भेजना. Right, students? उनको compensation देना. Then promotion करना उनका on the basis of their seniority, on the basis of their work. Right, students? And maintenance of managerial personnel. पर्सनल मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयज है, स्टूडेंट्स. राइट स्टूडेंट्स? पर्सनल मीन्स यहाँ एम्प्लॉयज है. सो स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. राइट स्टूडेंट्स? सो इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम. राइट स्टूडेंट्स? सो इट इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, having the right qualification, doing the right job at the right time. Right man, right job, right time, right place. This is known as staffing. I hope it is very much clear to you, students. Now let's discuss staffing. So staffing consists of manpower planning, recruitment, selection, training, compensation, promotion and maintenance of managerial personnel. Personnel means employees. It involves finding the right person for the right job, having the right qualification, doing the right job at the right time. Right, students? I hope the meaning of staffing is very much clear to you, students. Right, students? Let's discuss the importance, benefits, needs or advantage of staffing, students. Now the very first importance of staffing is filling the roles, jobs को भरना. The basic function, the basic importance of staffing is to fill up the various position in the organization based on any level in the organization, or based on any level in a factory firm company. Right, students? That is the main work of a staffing manager or HRM manager. There's a new concept, students, staffing manager or HRM manager. So filling up the roles, jobs को भरना. It is only through staffing process among all the 5 functions of management, students, that the job has been filled up only in this function of management, that is staffing. और ये काम कौन करता है? HRM मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर और स्टाफिंग मैनेजर. राइट स्टूडेंट्स? तो फिलिंग अप द रोल्स, इट इज थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड टू फिल द वेकेंट जॉब.
Right, students, I hope it is very much clear to you. It is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job in the organization. Right, students, now come to the second importance, placing right person on the right job. Right, students, through proper recruitment, selection, and through proper qualification, right? In any company, factory, firm, organization, the staffing manager can place the right person on the right job based on their experience and qualifications of the candidate. By proper recruitment and selection. Recruitment means apply karna job ke liye if there is vacancy occur. Selection means selection hona after giving the interviews. Employees are given a place according to their qualification. I hope it, students, it is very much clear to you. So placing right person on the right job as per the qualification of the candidates. So let's discuss again, students. By proper recruitment and selection, employees are given a place according to their qualification. Now come to the third importance, students, growth of the enterprise. Right, students? Of course, whenever we fill the various job positions and by putting the right person on the right job as per their qualification and experience, the growth of the company, the growth of the business, and the growth of the factory firm organization will definitely improve or increase, students. So, growth of the enterprise. By appointing efficient staff, staffing ensure continuous survival and growth of the enterprise. I hope the third importance is very much clear to you, growth of the enterprise, right? So, by appointing efficient staff, staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise. Optimum utilization of resources, right, students? Optimum utilization of resources, सबसे पहले बेटा staffing manager under manpower planning सबसे पहले ये find out करता है कि number and types of employees required in the organization, and after that उसके हिसाब से vacancies create की जाती हैं. क्रिएट करने के बाद वैकेंसीज निकाली जाती हैं और देन एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट्स को अपॉइंट किया जाता है. आई रिपीट, स्टूडेंट्स, थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, दैट कम्स अंडर थ्रू मैन पावर प्लानिंग. स्टाफिंग मैनेजर सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग करता है. मैन पावर प्लानिंग करके द स्टाफिंग मैनेजर फाइंड आउट द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट स्टूडेंट्स, एंड देन क्रिएट अ वैकेंसी, राइट. उसके बाद बेटा वो वैकेंसीज निकालते हैं और एम्प्लॉयज को, कैंडिडेट्स को रखते हैं एज पर द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस या एज पर द नीड ऑफ द जॉब. सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. Number of employees and types of employees required in the organization. Of course, students, number of employees and type. Type का मतलब है as per the qualification. Students, it is very much compulsory कि position या post जितनी high level की होगी, experience उतना ज़्यादा मांगेगी company candidate से. Right, students? That is known as the type of employees required in the organization. Right, students? So come to the next one. Fifth importance, improve job satisfaction. How staffing manager can improve the job satisfaction to the newly appointed candidates or to the newly appointed employees or to the existing employees? By giving training, promotion, healthy working conditions. By giving training, promotion and healthy working conditions. Improve job satisfaction. It includes training, promotion, compensation and healthy working condition. Compensation means wages and salaries to be given on time, students. Key to other function. Planning is the base function, organizing is the resource function, staffing is the key function of the management, students. Directing is the heart function and controlling is the checking function of management. So students, the jobs has to be filled only through the process of staffing. Right, students? So key to other function. Let's discuss the next importance that comes under staffing. No other function of management can be carried out without efficient staffing function, because all the functions are performed by human beings and it can be done through staffing function only, because all the functions are carried out by the human beings who are employees in the company, factory, firm, organization, students, and it can be done only through staffing function only. I hope the importance is very much clear to you, students. So let's discuss the importance, filling the roles. Jobs को भरना, students, right? By placing the right person on the right job,
then growth of the enterprise can be done when you fill the job through right person on the right job as per their qualification. Optimal utilization of resources, you know it very well. Through manpower planning and job analysis, we can find out the number of employees and type of employees required in the organization. राइट स्टूडेंट्स, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन, आप अपने एम्प्लॉयज को या न्यूली अपॉइंटेड कैंडिडेट्स को किस तरीके से जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं जिससे कि वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट से काम कर सके थ्रू ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स, थ्रू ट्रेनिंग, प्रमोशन एंड कंपनसेशन. राइट. Key to other function. No other function of management can be carried out without staffing functions because all the work are to be carried out by the human beings who are employees, managers, supervisors, and it can be done only through staffing function. I hope this concept is very much clear to you, students. Right, students? So, staffing function can be performed efficiently by all organization students. If right kind of employees are not available, it will lead to wastage of material, time, effort and energy, resulting in lower productivity and poor quality products. The enterprise will not be able to sell its products profitably. It is therefore essential that right kind of person must be available at right number at the right time. Right, students? Right kind of person are available at the right number at the right time. They should be given adequate training so the wastage can be minimum. They should be given adequate training so the wastage is minimum, students. Right, students? The right people can help to take business at the top. The wrong people can break the business. Right, students? I hope this is very much clear to you. The need for staffing function has assumed greater importance these days because of rapid advancement of technology, students, increasing size of the organization, and complicated behavior of human beings. Right, students? The need of staffing arises just because of these three functions: rapid advancement of technology, increasing size of organization, and complicated behavior of human beings. I hope the meaning and the importance of staffing function is very much clear to you. Now come to the another concept of staffing, students. The another concept of staffing is a part of HRM, human resource management. Now, students, बहुत ध्यान से सुनिएगा. एचआरएम का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट छोटा है. स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ एचआरएम. बहुत पहले क्या होता था, अर्लियर 20 इयर्स बैक और 25 इयर्स बैक स्टूडेंट्स, जो स्टाफिंग का जो भी काम होता था वो डिपार्टमेंट के मैनेजर्स अपने आप कर लेते थे. डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर अपने आप कर लेते थे जब कंपनी बहुत छोटी थी, जब इतना कंपटीशन नहीं था. राइट, स्टूडेंट्स? इन द प्रीवियस ईयर्स, बहुत पहले बेटा इस तरीके से होता था. व्हेन देयर वाज कंपनीज बहुत कम होती थी, फैक्ट्रीज और फर्म्स होती थी, तो जितना भी अपॉइंटमेंट्स होते थे, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, प्रमोशन, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज के साथ खुद ही ये काम कर लेते थे. इवन कंपनसेशन और वेजेस और सैलरीज भी वही डिसाइड करके दे देते थे. लेकिन टुडे, इन टुडेज ग्लोबल सिनेरियो, देयर इज अ नीड for a separate department that is known as HRM department, human resource management or human resource department. With the increasing technology, with the increasing size of the company, with the increasing advancement in the environment, there is a need for a separate department known as HRM department. अब HRM department ही ये सारा काम संभालता है. ये what are those work? These are the work. ये सारे वर्क है, स्टूडेंट्स. So staffing HRM का पार्ट है. Staffing is a traditional concept. HRM is a modern concept. But as per your NCERT, we have to discuss the word staffing, though it is a part of HRM. Right, students? So, human resource management includes many specialized activities. Now, what are the work of a human resource manager under human resource management in any business, firm, factory, organization? Human resource management includes many specialized activities and duties which the human resource personnel must perform. These are the responsibilities and duties which a human resource manager must perform in the company. Right, student? The very first is human resource planning. Of course, human resource planning के अंदर सबसे पहले क्या करेगा स्टाफिंग मैनेजर और HRM मैनेजर? नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. That comes under manpower planning, as I told you earlier also. It means determine the number and type of personnel, means employees, persons required to fill up the vacant job position of the organization. Right, students? I hope this is very much clear to you. Employing people, किस तरीके से
एम्प्लॉय करना पीपल को थ्रू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन देकर, प्लेसमेंट देकर। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। रिक्रूटमेंट अप्लाई करना जॉब के लिए, वैकेंसीज निकालेगी कंपनी, कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे जॉब के लिए, दैट इज नोन एज रिक्रूटमेंट, राइट। उसके बाद सिलेक्शन करना। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज देयर इज वन वैकेंसी एंड 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर अप्लाई फॉर दैट पोस्ट, सो दिस इज नोन एज रिक्रूटमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, वैकेंसी इज ओनली वन, तो 9 रिजेक्शन होंगे, 1 सिलेक्शन होगा। आई रिपीट, 9 रिजेक्शन होंगे, 1 सिलेक्शन होगा, दैट इज नोन एज सिलेक्शन। और जिसका भी एक का सिलेक्शन होगा फ्रॉम अमंग द वेरियस कैंडिडेट्स, दैट 10 कैंडिडेट्स इन द हु आर अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम प्लेसमेंट देंगे, राइट स्टूडेंट्स। करियर ग्रोथ, सो दीज आर द वर्क ऑफ एचआरएम। करियर ग्रोथ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, ये काम भी किसका, एचआरएम मैनेजर का और स्टाफिंग मैनेजर का, राइट। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अब आपने रिक्रूटमेंट किया, उसके बाद सिलेक्शन कर दिया, उसको जॉब दे दी, प्लेसमेंट कर दिया, उसको ट्रेनिंग पर भेजा, ट्रेनिंग पर भेजने के बाद स्टूडेंट्स अब उसका वर्क चेक करेंगे, राइट स्टूडेंट, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। It refers to evaluating the performance of a new selected employee or the existing employees. न्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज की हमें ट्रेनिंग के बाद हमें परफॉर्मेंस चेक करनी होती है कि उसको काम आया नहीं आया, और एक्सिस्टिंग एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं फॉर प्रमोशन, फॉर हायर कंपनसेशन। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट रेफर्स टू इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग फीडबैक ऑल्सो। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। फीडबैक मीन्स उनकी रिपोर्ट के हिसाब से आगे काम करता है एचआरएम मैनेजर। मोटिवेशन, बाय ऑफरिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, राइट स्टूडेंट्स। इंसेंटिव मीन्स अदर देन वेजेस और सैलरीज के अलावा व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन बाय द स्टाफिंग मैनेजर और एचआरएम मैनेजर टू द एम्प्लॉयज। या बेटा आगे चल के सारे डिटेल में पढ़ेंगे, इट कम अंडर द इन द नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस, नेक्स्ट वीडियोस में ये आप सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, मोटिवेशन, इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। हियर मोटिवेशन, बाय ऑफरिंग अ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर होता है फैसिलिटीज देना। फैसिलिटीज एम्प्लॉयज को 2 फॉर्म में मिलती है, एक मनी फॉर्म में और एक नॉन मनी फॉर्म में, राइट स्टूडेंट्स। कंपनसेशन, इट मीन्स रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज कीपिंग इन माइंड देयर क्वालिफिकेशन एंड अदर फैक्टर्स। कंपनसेशन मीन्स वेजेस और सैलरीज कितनी देनी है एम्प्लॉयज को एज पर देयर नीड्स या एज पर देयर क्वालिफिकेशन, राइट। एंड कंपनसेशन आर बेस्ड ऑन टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड होता है स्टूडेंट्स डेली सैलरी, वीकली सैलरी, मंथली सैलरी। परफॉर्मेंस बेस्ड होता है कि जितने आपने गुड्स बनाए आपको उतनी सैलरी मिलेगी, राइट स्टूडेंट्स। सो कंपनसेशन कैन बी टाइम बेस्ड एंड परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड स्टूडेंट्स, टाइम बेस्ड मीन्स डेली, वीकली और मंथली, राइट स्टूडेंट्स। एंड परफॉर्मेंस बेस्ड मीन्स जितने गुड्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एम्प्लॉयज, द सैलरी हैज टू बी गिवन अंडर परफॉर्मेंस बेस्ड। Providing social security and welfare of the employees, healthy working conditions, insurance, problems और grievances को solve करना, it is the work of HRM manager और staffing manager under staffing chapter. So providing social security and welfare of employees, maintaining labor relations and union management relations, handling grievances and complaints. Right, student, this is the work of a HRM manager or a staffing manager under staffing function. राइट स्टूडेंट्स, वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम्स है, क्या ग्रीवियंसेस हैं, वो क्या डिस्प्यूट्स होते हैं, लेबर मैनेजमेंट रिलेशन से उनके साथ रिलेशन अच्छे बनाना बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड अ लेबर, राइट। रिव्यू एंड ऑडिट ऑफ पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ऑडिट्स टू चेक द अकाउंट्स। डिफेंडिंग कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस। लीगल कॉम्प्लिकेशंस कोई भी बिजनेसमैन नहीं चाहता है स्टूडेंट्स, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस जितनी कम हो उतना ही अच्छा। तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस को अपनी तरफ से कम करना, अपनी तरफ से मिनिमाइज करना, कोई भी एरर ना हो, ये काम किसका होता है, एचआरएम मैनेजर और स्टाफिंग मैनेजर का होता है अंडर स्टाफिंग फंक्शन। जितना भी ऑफिशियल काम होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, वो स्टाफिंग मैनेजर और एचआरएम मैनेजर करता है विद द हेल्प ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड विद द हेल्प ऑफ अदर मैनेजर्स ऑल्सो। So, review and audit of personal policies and procedure, defending the company in law suits and avoiding legal complications. So, these are the functions, students. These are the functions of HRM manager or staffing manager.
But students, staffing is it is a traditional concept. Now HRM manager is a new concept. There is a need of separate department. इन सारी बातों को देखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए स्टूडेंट्स, there is a need for a separate department known as HRM department. Right students, earlier this work has to be done by the manager itself in traditional concept. लेकिन आज की concept में that is not at all possible. Right? So it is important to understand that staffing is both a function of management, just like planning, organizing, directing and controlling, as well as the distinct functional area of management. Right students, just as marketing management and financial management. Right students, so in the present scenario, if we have to conclude the importance and role of HRM or staffing manager, we can conclude that staffing serves the basic purpose of line authority as well as staff authority. Right? It has a combination. It can come under the functions of management or under separate portfolio also. Right students, like planning, organizing, staffing, directing and controlling. And just like marketing management, financial management, उसी तरीके से बेटा staffing के अंदर HRM management भी होता है, human resource management. So it is important to understand that staffing is both a function of management, just like planning, organizing, directing and controlling, as well as distinct functional area of the management, just as marketing management and financial management. Staffing is therefore referred to as both a line as well as a staff authority. Right students, staffing manager comes under line authority as well as staff authority, or the activity that is essential function of the manager, as well as advisory role played by the HRM department. Right students, it also solves the purpose of an essential function of a manager as well as advisory role played by the HRM department. Right students, I hope this concept is very much clear to you students. So let's discuss the staffing as a part of human resource management. Right? Human resource planning. It means determining the number and types of employees or personnel required to fill up the vacant job position of an organization. The next is employing people. Employing किस तरीके से employing people? Recruitment, selection, placement and personnel. Right students? Career growth, training and development of employees. Right students? Training जो न्यू एम्प्लॉयज को दी जाती है, डेवलपमेंट जो प्रमोशन के टाइम पर काम सिखाया जाता है, एट द टाइम ऑफ प्रमोशन, दैट कम्स अंडर डेवलपमेंट. ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू प्रेजेंट पीरियड, जबकि डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर ऑफ द एम्प्लॉयज, पीरियड ऑफ द एम्प्लॉयज. राइट? परफॉर्मेंस अप्रेजल, टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ न्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज एंड द ओल्ड एम्प्लॉयज. न्यू सिलेक्टेड एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं स्टूडेंट, जिससे कि उसका काम अच्छा हो, और ओल्ड एम्प्लॉयज की हम परफॉर्मेंस को सिलेक्ट करते हैं जिससे कि उनका काम बहुत बढ़िया हो. Right students, I hope this is very much clear to you. Thank you students.